जस्टिन तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ सच लिखता हो यार। कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो। इतना गंदा सोचते कैसे हो? इतने भी तो नादान नहीं है ना। बट आप एक्सप्लेन तो करने दीजिए ना मुझे। आई एम नॉट सेइंग कि आप दीपिका का नाम लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दीपिका का नाम लीजिए। नो डू इट आउटसाइड। उनकी अपनी टीम्स है प्रमोट करने के लिए, यहाँ पे उनको प्लांट मत कीजिए। You are calling me a jingoistic woman who's Kangana, making a film on nationalism. Is it my mistake to make a film on? जैसा कि शादी और संगीत की बात हो रही है तो हो सकता है कि इस साल या नेक्स्ट ईयर हम देखें कि जो आपके फेवरेट एक्टर हैं रणबीर कपूर या जो आपके फेवरेट क्रिकेटर हैं विराट कोहली, उनकी भी हमें शादी देखने को मिले। तो क्या कंगना उनकी शादी में डांस स्टेप करते हुए हमें देखी जाए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने, ये बहुत जरूरी है। हाँ, कौन से गाने पे आप नाचोगे? हाँ, कौन से गाने पे आप डांस करेंगे? मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं आप? नहीं, ये सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। नहीं कि मैं क्या सीधी सादी लगती हूँ आपको? कुछ भी आंसर दूंगी क्या? Kangana and Raj, Justin here from PTI towards your left here. Hi, hi. जस्टिन तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ सच लिखता हो यार। कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो। इतना गंदा सोचते कैसे हो? Kangana, I don't think it's fair to say that. No, but is it fair for you to write stuff like that? Like what? Like what? Since you mentioned. No, Kangana, I really mean to ask. It's not fair for you to sit on that You podium. are bashing my film, Manikarnika. Have I done a mistake by making a film on a? You are calling me a jingoistic woman who's Kangana, making a film on nationalism. Is it Kangana, my mistake to make Kangana, a film on? If I may, with your permission, I did not even tweet anything about Manikarnika. So. I will send you. And I respect. Yeah, of course. And I You don't have know. This been- is not the right way, Kangana. You cannot intimidate a journalist because you are at the power position here. Can we Sorry. have the And I didn't mean to intimidate anyone. I am just being very candid. That's how everyone is talking to each other here. Like that. That's why I'm being candid. And Justin, you came to my van and we had lunch together and I offered you, we have had an interview together. And after that, of course, there are things that been happening and you yourself. So don't say that I am taking, you have spent at least 3 hours in my van. Okay, right? So you are a friend. Kangana? In that context, I'm saying that after you came out of my van, things have changed drastically. So in that Kangana? context, I know you personally. So don't Kangana? try and tell me that Kangana, I am if I- intimidating you from here. When Kangana, you if I have may add, no. personally, you Kangana, this message is me not personally. Fair. Kangana, do you realize this is not fair? You This- message me personally. You I come to my never van. did. I never. So I am. Kangana, Don't try and tell me that I am being Kangana, a star right no, now. no, I'm not no, being a sorry, star. I'm talking to like a friend. Sorry. Oh no. I think we need to clear this, Kangana. I think we need to clear this. I never guys. spoke to you for 3 hours on your I'm van. sorry. I did interview. You did. Kangana, let me speak. Did I interrupt when you were speaking this? This is not done. But since you started, let me confirm. I interviewed you for Manikarnika, which was done by the PR. Parag Desai, I think, was handling the film. I interviewed you for half an hour. We did not have lunch. I never messaged you ever. I did my job. Let's come to the- No, You no, messaged me. Kangana, I did not. I did not. The problem is, an actor can't accuse me of something. not I've been at here all. for We'll good take many it years. offline. I've interviewed several people. But at the same time, I know how you're harming my brand. So I'm I'm very not comfortable answering inconsequential, to you. Kangana. No, I am very inconsequential We'll with take it 600 offline. followers on Twitter. I have nothing to. I cannot harm anyone. But I cannot What answer your question. That is all what I was coming to. But you Kangana- just flared up Kangana, and you Kangana, made it about Kangana. star and journalist. Kangana. कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा और यूनिक कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग एंड आई एम क्वाइट श्योर कि हर घर में इसको पसंद किया जाएगा। फिल्मों की बढ़ती कंपटीशन और खासकर ऐसा लगने लगा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म हर घर में जा चुका है जी। तो आपको क्या लगता है कि फिल्मों की कई बड़ी फिल्में जिसमें गंगूबाई भी है, कई फिल्मों की रिलीज डेट जल्दी आ रही है, तो किससे कंपटीशन किसके साथ है एंड हाउ यू वांट टू ओवरकम दैट? कंगना, आप जवाब दे दो इसका। यार मेरे पे क्यों आप ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं? देखिए, हम यहाँ पे अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, अपनी शो प्रमोट कर रहे हैं। उनकी अपनी टीम्स है प्रमोट करने के लिए, यहाँ पे उनको प्लांट मत कीजिए, है ना? वो लोग अपने शोज करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म्स के। आप यहाँ पे क्यों प्लांट कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस? उनका कुछ किसी फिल्म का इस ओटीटी शो से लेना देना ही नहीं है। Kangana, I'm so sorry, Bhavna again this side.
just because we are on the same subject, I wanted to clarify something, that while I did take an example of Deepika, the intention was not to promote any film. You, of course, you named the film. Now you are also naming a film. You are also naming a film which is coming. You are also naming a film. Kangana, let me finish. Obviously, you have been planted by the PRs of the said film people. अरे यार हम इतने भी तो नादान नहीं है ना. But आप explain तो करने दीजिए ना मुझे. I am not saying कि आप Do it- दीपिका का do it नाम so- लीजिए. No, मैं no, ये do नहीं it- कह रही हूँ कि आप दीपिका का नाम लीजिए. No, do it outside. I am saying. I'll talk to you. I'll engage with I'm you for sure. 45 minutes. So controversy or no controversy, one thing one cannot change. प्लीज हिंदी. कंट्रोवर्सी या नो कंट्रोवर्सी, एक चीज जो कोई भी चेंज नहीं कर सकता वो ये है कि यू हैव बीन, आई एम सो सॉरी एकता बट आई हैव टू सॉर्ट ऑफ स्विच ऑन एंड ऑफ. इनको हिंदी आती नहीं है. आपको हिंदी आती नहीं नहीं है. आती तो है फिर हिंदी में बोलिए. ये एक ओह माय गॉड, कंट्रोवर्सी का क्या वर्ड होता है हिंदी में? चलो इंग्लिश में बोल दो. one thing no one can change is the fact that you have been a disruptor when it comes to the way people look at actresses in the industry itself. Unfortunately though, I have seen that despite all the achievements and successes that actresses have seen in the industry, we still have actresses being judged for the length of their necklines and hemlines. The recent case being Deepika Padukone, who was targeted by an influencer over the promotional dresses that she wore. For someone who has been the voice for women all around, and especially actresses, I want to know, how do you reflect back on this? Because when we see an actress being judged for what she wears on social media, it really does bring down the entire essence of women empowerment. That is how I look at it. How do you look at it? Look, I am here to defend those who can't defend themselves, all right? She can defend herself. She has the privilege, the platform, and I can't promote her film here. Sit down. Thank you, Malini. About the lady who'd asked me about the question. So I would like to say that such discussions, like I answered my earlier question, that such discussions are very important these days, and it is not to object to anybody's preferences. I'm talking to you, please look at me. I'm talking to you, please look at me. I'm talking to you, please look at me, because I'm personally answering your question, just so that you can be satisfied. So it's not an objection. That, how you said that the words jingoism or chest thumping are nowadays used to shame people, and people should wear their patriotism or their love for their country on their sleeves. But on the other side, people who do that also shame those who don't believe in expressing their love for their country and, openly, or they have their own ways. We see how people have been beaten up in cinema halls when they don't stand up for national anthem. I mean, you can love your country and also express in your own ways, and that does not mean to thump your chest or go out and say things. So what do you say about that, about the other side of the debate? Well, to this, honestly, like Prasoon sir said, love is love. If you love your partner and you never want that partner's company, it's up to you. You can really internalize it. But it will never manifest into anything concrete. It will never really manifest into a beautiful relationship, and nothing will come of it, no partnership. It will only be inside of you. The Constitution is a promise that all of us have made with each other, with the motherland. You understand what Constitution is, right? It's not a God-gifted gift. It's not a gift that has fallen from the heaven. If we add another piece of land into this land, we make a promise with even those set of people that this is what we oath to protect. So that promise needs to be owned. It needs to be sure that we own this promise. You cannot internalize it. It is not something to be internalized. मेरी एक फिल्म आई थी मेंटल है क्या, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया कि तुमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत गलत लिखा. थोड़ी बहस हुई, बहस टल गई, इवेंट अच्छे से गया, लेकिन 4-5 घंटों में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, खुद को जर्नलिस्ट बताते हैं, कोई हजारों की तादाद में गिल्ड बनाते हैं जिसको कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, और ये अनाउंस होता है कि कंगना की फिल्म को बैन कर दिया जाए. अब इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि उससे पहले मेरी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई थी, जबकि मेरे को सब प्रोडक्शन हाउस ने सबने बैन किया, मगर फिर भी खुद मैंने डायरेक्ट की, तो इनको डर हो गया कि अब इसकी राष्ट्रवादी आवाज ज्यादा स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, बहुत दूर तक नहीं जानी चाहिए. मेरी फिल्म आई है, उसको नुकसान किया, तो वो गिल्ड उसके बाद डिसॉल्व हो गई, उनका कोई पता नहीं. अर्नब गोस्वामी कितने दिनों से अब जेल में है,
कोई जर्नलिस्ट गिल्ड नहीं बनी, किसी ने कुछ नहीं कहा। हाई कोर्ट खुद कह रहा है कि ये गलत है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। देख रहे हैं आप कितनी कम राष्ट्रवादी आवाजें हैं इस देश में, और लॉबी कितनी स्ट्रांग है। मैं आपको अमेरिका का एग्जांपल देती हूँ। ट्रंप में कितनी भी बुराइयां हो, मगर ये बात सच है, वो चाइनीज वायरस को चाइनीज वायरस कहता है। रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को ये नहीं कहता कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है। आज अगर ट्रंप सत्ता में नहीं है तो सबसे ज्यादा फायदा होगा चाइना को, और वो देश जो टेररिज्म फैलाते हैं। तो आप देखिए, विदेशी शक्तियों ने उनका वोटिंग सिस्टम ही हाईजैक कर लिया है पूरी तरह से, जैसा कभी हुआ ही नहीं आज तक इतिहास में। ये शक्तियां इसी तरह से भारत को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं। हमारे यहाँ पे कुछ अच्छे लोग हैं जिसके करके अभी हमारे यहाँ पे फिर भी हम उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपका जागना बहुत जरूरी है। सोचिए, जब भी कुछ खरीदते हैं सोचिए कि ये राष्ट्रवाद में हेल्प करेगा या नहीं। जब भी आप कुछ देखते हैं, किसी जर्नलिस्ट को देखते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, आप ये सोचिए कि इन लोगों की आइडियोलॉजी क्या है, ये लोगों की इंटेंशन क्या है।